morning, everyone. My name is Anuradha Dar, and I'm General Secretary of Three Arts Club. It gives me immense pleasure to welcome all of you to this morning's exclusive talk by Dr. Anuradha Kapur. Today's webinar is a special one for many reasons. Dr. Kapur's father was instrumental in Three Arts Club's success back in the day. Three Arts Club was founded in 1943 and has a wonderful history of its own. It was one of the few theatre groups in the country that strived for 40 years on audience support and box office returns. The three key people central to Three Arts Club were Shri M.N. Kapur, Shri Ramesh Mehta, and Shri R.M. Kaul. Ramesh Mehta was actor, director, and writer, and he was assisted in organization by R.M. Kaul, who, along with unconditional support of M.N. Kapur, took the group to great heights. The contribution of Three Arts Club to the field of theatre needs to be written in scarlet and gold. The club has the distinction of being one of the first groups to give a platform to women on the Delhi stage. It is therefore even more special that we have Anuradha ji speaking today, since her work has been key to the women's movement. Three Arts Club was revived in 2008 and has since produced 24 plays that have been staged across the country. We continue to work for the promotion of art and culture through the medium of dance, drama, and music. Three Arts Club is known for supporting artists, both amateurs and professionals, across age groups, gender, and class boundaries. We regularly organize an annual theatre festival, acting workshops, inter-school competitions, and we invite to reach out us if you would also like to be associated with our work. Now, without further ado, I would like to invite Dr. Anuradha Kapur to speak to us on the topic of who is a thinking actor. Dr. Kapur needs no introduction, but I would be remiss if I did not mention just a few of her accomplishments. Anuradha ji was Professor of Acting and Direction at the National School of Drama for over 3 decades. She is the recipient of the prestigious Sangeet Natak Academy Award in 2004 and the G. Vasant Lifetime Achievement Award for Excellence in Theatre in 2016. On a personal note, I should add that Dr. Kapur has always been very supportive of Three Arts Club's activities. We fondly cherish the contribution of your father in building Three Arts Club from the ground up. For me too, he was a role model and had a significant role to play in where I stand today. With that, ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Dr. Anuradha Kapur. Dr. Kapur will speak for 40 minutes, after which we'll open the session up for question and answers. Please keep yourself on mute for the duration of the talk. After the talk, you may raise your hand and we'll call upon you to ask your question. Dr. Kapur, theatre director, professor of drama, and former director, National School of Drama, please, the floor is all yours. Dr. Anuradha Kapur. Thank you so much, Anuradha. It's a very generous introduction, and it's always a pleasure to be part of anything that Three Arts Club does. We've had a long-standing relationship from the time of your father and my father and Three Arts Club. Of course, my aunt, who was one of the major actors of Delhi stage, but that's one history. But it's also history that you have actually created in reviving the Three Arts Club, which is very important, and it was a formative group in Delhi and in India for the work that it's done. So in some senses, many of us in the theatre must thank you for bringing up a group again that has had such a long history and has been so important. So thank you very much for inviting me. It's my pleasure. And it's something that I hope generates, the conversation here generates some thinking on acting. So also thank you, all of you, for coming in and joining. I see many friends and I see some students and many people that I know in the theatre. So it's my pleasure to be here with you again after
so very many months of lockdown where one doesn't meet anybody, and especially for theatre people, not to be in the same room, not to breathe the same air, not to say hello and not to touch, all of that is great deprivation. So thank you. So I will start on this. Who is a thinking actor? And I want to break down this title. Who is a thinking actor? Who is a thinking actor? Who is a thinking actor? Now, all of them actually employ different kinds of thoughts, imply different kinds of thoughts. It also means that you could probably be an actor without thinking. And then we'd have to ask, what is that? So I'm going to set up a series of questions, and I think we try and find the answers together. And then after 40 minutes, we will talk about it as much as we can in the time slot that we have. So basically, then we are asking, what is the difference between thinking in life and thinking on stage? So when you're not on stage, when you're actually working, what kind of thinking do? You think about crossing a road, you think about cooking, you think about eating, you think about going somewhere, you do a daily routine, you do all kinds of things. You think of your family, your relationships, your friends. When you think, you're thinking of what am I going to do today? What am I going to say? How am I going to say it? All these things. Without thinking, you actually can't be, as it were, doing your daily routine. But what is thinking on stage? It's probably doing all these things, thinking about relationships, doing an action, walking across a room, this rehearsal space or the set. It's probably doing all this, but you do it because you're doing it for the theater, in the theater, for a text, not because your life depends on it. And that's where the whole thing about what is thinking on stage and what is a thinking actor comes up. If you're doing all these things, moving, speaking, talking, how do you do them? When you're on stage, you memorize your lines, you often memorize your moves, you get used to your costume, you know your co-actors mostly, if you had a rehearsal. You go for rehearsal. But I must just add, as part of history, that there were many forms, including Shakespeare, including Stanislavski's historical moment, when there were no rehearsals. So what does that mean? You got your lines. Often you got your lines, just your lines, especially in Shakespeare, just your lines, the cue line before and the cue line after. So what you were doing was you were listening. And when you got your cue, you spoke. And when you finished your lines and the other actor got their cue, they spoke. But there was no rehearsal. That is also the case as late as Stanislavski's time. Then there is no rehearsal. And what you do is you're only listening on stage and you're making your own moves as according to where, yet let's say, the move takes you. In other words, after you finished and somebody else starts, you go back and you give the stage to the main speaker. This, in today's modern theater, after acting training, for instance, of Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, 20th century acting training in the West, but also acting training in India, which has a longer history than the Western acting trainer, you didn't do this, you rehearsed. And Stanislavski is one of the first Western theorists of acting to stress that the most important thing to make a thinking actor is rehearsal. In other words, आप स्टेज पे क्या करने वाले हैं वो आप पे खुद पे डिपेंडेंट नहीं है. मेरा जी चाहा कि मैं लाइट में खड़ी हो जाऊं और मैं गई और मैंने फुटलाइट्स कैच कर ली, लाइन बोला चली गई. नहीं, अगर किसी और की लाइनें हैं तो आपको उनको स्टेज देना पड़ेगा. And I just want to give you a small example of something that I love. And those of you we've had occasion to meet before, I give this example many, many times because it's a wonderful example. In the time of Stanislavski, this is one of the incidents that he hated and he produced
all his books and his exercises to make a thinking actor. And that was this, that in the time of Stanislavski and in the time of even a lot of commercial theater like Varsi theater, you never showed your back to the audience. क्यों? क्योंकि पैसा किस लिए दिया है? आपकी चेहरा देखने के लिए. तो आपको पीठ नहीं दिखानी. तो अगर पीठ नहीं दिखानी है और आपको एग्जिट करना है, तो आप कैसे एग्जिट करेंगे? Think about it. How will you go? You will go like this. Right? So इधर विंग्स है, ये स्टेज है, आप यूं नहीं चल के जाएंगे और आप यूं जाएंगे. So Stanislavski said, this is extraordinary. This is silly. Because अगर मेरा काम खत्म हो गया है स्टेज पे, तो मेरा काम और किसी और का काम कहानी में चलता है, मेरे मुताबिक नहीं चलता है. I am not the center always. Somebody else is, but even more than somebody else, the story is the center. So I come back to why I bring Stanislavski here, because Stanislavski is in some senses key to the modern acting tradition, which depends on psychology, which depends on thinking in a particular way. तो हम लाइन सीख सकते हैं, हम अपनी मूव्स याद कर सकते हैं, हम अपने कॉस्ट्यूम में, जैसे I said, we would get used to it. From here, then we come to know what is thinking. Thinking on stage is one, thinking as an actor and thinking as a character. मतलब आप स्टेज पे जब एक्टर के साथ सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, you don't go out of the light. आप इतने इमर्स नहीं हो जाते अपने रोल में कि आप स्टेज में विंग्स में जाएं और स्टेज पे आना भूल जाएं. ये भी नहीं होता. पिट हो तो आप पिट में गिर भी नहीं जाते हैं. You know exactly where you are. That's thinking like an actor. But you are also side by side thinking like the character. So there is a difference between yourself and the self of the actor. Stanislavski says we must develop the self of the role, so that when you think on stage, we know that the role is thinking, not you. So one of the things that we might want to think about is कि हम आपको, अगर आप स्टेज पे नए नए आए हैं और आपको कहें कि हमें जरा सोच के बताइए, तो ये हो जा सकता है, ये हो जा सकता है, ये हो जा सकता है. Stanislavski says, no, there is no action for thinking. Thinking is shown by action. मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आपके एक्शन से पता चलेगा, न कि आप दिखाएं कि मैं सोच रही हूं. तो वो ही हुआ. गर्मी कैसे पता चलेगी? ऐसे करके नो. गर्मी कैसे पता चलेगी? कि अंदर आपके क्या हो रहा है. That is a thinking character via a thinking actor. Therefore, he says, doing, and that is not just Stanislavski, that's part of Abhinay, that's part of Natyashastra, that's part of my role. Doing is what shows thinking. तो आप स्टेज पे क्या करते हैं? आप स्टेज पे कैसे दिखाते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं? That is the thinking actor, because you have analyzed your text. In other words, आप ये क्यों कह रहे हैं, किस जगह कह रहे हैं, और उसका मायना क्या है. जो आप कह रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, जो आप छुपा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है. And I would like to just add why the chupana is so important is because Stanislavski is writing in the time of what we call the high modern theater. I mean, his theories, Chekhov, Ibsen. And Ibsen plays in modern drama, for instance, also, let us say, Mohan Rakesh, Vijay Tendulkar, Mahesh L. Gurjwar. What it is that in the modern play, you hide as much as you show. आप जो बोलते हैं उसमें 50% to 60% is the top. No, sorry, only the 30% is the top. 70% you don't say. अगर आप अपनी जिंदगी में भी देखें तो आप हर चीज जो आपके दिमाग में है वो आप नहीं बोलते. आप बहुत चीजें ऐसी बोलते हैं जो कि आपको लगे कि ये जरूरी है बोलना. बहुत चीजें आप नहीं बोलते हैं.
That is the text that the thinking actor will find out, which in acting traditions, as all of you know, who are actors and who are, theater practitioners, is called the subtext, sub as in below. So that subtext is the business of the actor. It's the business of the thinking actor. माने आपके पास टेक्स्ट तो है, सभी के पास है, बट आप उसका सब क्या बनाते हैं? That's what is the thinking actor. And how do you make the sub? You understand what the person is saying. You understand what the person is not saying. और इस दर में थोड़ा सा आपको एक सेपरेट करती हूँ. आप as an actor, what you decide is the subtext is yours. Another actor will get another subtext. That is why every role isn't the same. Each actor will present a different role. What an actor in a drama school in first year, the kind of subtext she might find may be different from the subtext she finds in third year. The subtext that Seema Mispas may find in a particular play will be different if she does the play after 2 years. तो subtext आपकी जिंदगी के मुताबिक चलता है, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक चलता है, और तरीका उसको लाने का is the tarika that Stanislavski and many other acting theorists, I'm primarily talking of Stanislavski here only as convenience. Meyerhold does the same thing, and many other theorists do the same thing. What is the sub? Sub को निकालने के तरीके अलग-अलग होते हैं. I'll come to that because I'll also give you some sense of the exercises that take out the sub of the text. So, subtext, the thinking actor will find the subtext. Then the thinking actor will find action. Mane, action that connects to the story, not action that connects to yourself. Here, the difference between yourself as an actor and the self of the character comes up. Mane, mera action on stage could be dependent, me as a person, कि मैं अगर उस वक्त मुझे गर्मी लग रही तो मैं पसीना पोंछ लूं, नर्वसनेस हो रही हूं तो पानी पी लूं, पर ये तो नहीं करते हम स्टेज पे. हम वो ही करते हैं जो एक्टर उस वक्त कैरेक्टर बन के करता है. That action has to be found. And according to Stanislavski and according to your own experience when you think about it, the main action is in fact the main text. माने आप चाय कैसे चलाते हैं, किस स्पीड पे चलाते हैं, आप एक कमरा को किस स्पीड पे चल के जाते हैं, आप किसी सबटेक्स्ट का एक्शन कैसे ढूंढते हैं, that is the main work. And here I'm quoting Stanislavski again. वो कहता है मैं प्ले में टेक्स्ट सुनने नहीं जाता, सब टेक्स्ट देखने जाता. So that is very important, action. And then comes the control of the action. And that is equally important. पानी आपने इस कप में डालना है और टेबल पे गिर जाए तो कंट्रोल नहीं है. The actors will say very clearly, a trained actor, you know exactly how long it's going to take to cross the room. When you're crossing the room, तो आप टेबल पे ठोकर नहीं मारेंगे, चेयर पे ठोकर नहीं मारेंगे, किसी चीज पे ट्रिप नहीं कर जाएंगे. क्यों? Because you know exactly. यहाँ तक कि some actors also plan in their head 10 कदम लगेंगे. And when you know in your own rehearsals, when you do acting, you take those 10 qadams, na 7, na 11, utne. That's also control. So Stanislavski will say the thinking actor finds the subtext, finds the action, and has control. Control का माने आप तेज चलना चाहते हैं तो आपको पता है वो कौन सी डिग्री की चाल है. आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो आप वो ही करेंगे. And I'll give you a small example. It's an example that we all know. You're going to go and get a cup of tea. तो आप उस चाय को जब लेने जाएंगे तो क्या आप एक चक्कर काट के चाय के पास जाएंगे कि सीधा चाय पे जाएंगे? आप सीधा चाय पे जाएंगे, उस पानी के गिलास पे जाएंगे, उस खिड़की को खोलने जाएंगे, घूम घूम के नहीं जाएंगे. घूम के जाने का मतलब that you are in slang फुटेज खा रहे हैं, आप अपने आप को दिखा रहे हैं, मोटिवेशन के मुताबिक नहीं जा रहे. So Stanislavski will say
Let us find the motivation of why you're opening the window, not because you're the hero, but because the text requires you to open the window. And you have to then have the control कि आपकी चिटकनी खुले. That's why actors work so hard that nothing unexpected happens on stage. चिटकनी मैंने खोलनी थी पर मेरे हाथी में चिटकनी आ गई तो क्या करेंगे? So you will have tested it before. You will have worked at it in the rehearsal. So text, subtext, action. And then he says control. Control means that I know exactly the rhythm, the tempo of the character, not the actor. The actor does the control. तो इस चीज के लिए Stanislavski, Meyerhold, all kinds of modern acting techniques will say to you, think on your feet. क्या कहने का मतलब? कि घर में बैठ के सारी लाइनें आप मगअप करके आ जाएं स्टेज पे, तो बहुत दफा आपकी बॉडी और आपके शब्द मैच नहीं करते. And you might have seen that. What does that mean? I am actually talking about, let us say, हवा आ रही है, ठंड है. But I have mugged my lines in a room that's very hot. I will never be able to come onto stage without trying the fact, what does it mean to change the weather of your line? And here I just say, Stanislavski gives you many wonderful exercises. Some things that I have often used in my work is that you have a line, but you change the weather. So, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ. Great lines, everybody knows it. Ashwathama ki lines, ye mera dhanush hai. But you change the weather. So if I change the weather of ye mera dhanush hai in great heat, in great cold, in the water, if I change the weather of the lines, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ में उस दिन वर्षा न हो रही हो, धूप कड़कती हुई चमक रही हो, तो lines बदलेंगी. Stanislavski says they should change. And one of the exercises that he has, and I love this exercise, it's a wonderful exercise, can be tried by all practicing actors or all actors, is that you look at a text and you do it after changing the weather. And you will find that when you change the weather, the line changes. And I want to add over here a little small anecdote. I was working with some actors in the Sikkim repertory online. And this was almost a year ago. And what was happening was we were looking at Haran Shavik जो आता है आषाढ़ के एक दिन में, कालिदास के बाहों में हिरन का बच्चा है. Now if you think about it, हम जब ये प्ले करते हैं तो वो हिरन का बच्चा एक खिलौना होता है, एक स्टफ्ड एनिमल होता है, नहीं? पर अगर वो न हो स्टफ्ड एनिमल, so we tried to bring, the actor said, मैं अपना कुत्ता लेके आऊंगा. और उसने अपने बाहों में कुत्ता पकड़ा और उसने डायलॉग बोला, तो स्पीच बिल्कुल अलग हो, क्योंकि तो हिल रहा था, वो उसको सूंघ भी रहा था, वो कूदना भी चाह रहा था. सो ये हमारा हरण शाविक है. ये आप दूध पिएंगे, आपको चोट लगी, इसका रिदम बदल जाने वाला है अगर आपके बाहों में एक इस मौके पे कुत्ता था. It's unlikely you're going to find a hiran, but it's a training that your text is related to your action, and which Stanislavski calls body, mind, thought, and action. That your action has the same pace as your thought. That's why Stanislavski was completely against mugging your lines. घर में बैठ के लाइनें कर लो, and some exercises that we often do in the theater is, आपने लाइनें याद की और मैंने बहुत आपको क्या कहें, तकलीफ देने के लिए आपसे कहा मुंह पे लिफाफा डालिए, और आपने डाल लिया, और आपने स्पीच बोली जैसे लिफाफा मुंह पे ही ना हो. तो इसका क्या मतलब हुआ? Are you thinking? No, you're not thinking. You are doing things by memory. You are doing things on automatic, fifth gear of the car. ये चल रही तो चलती ही जाएगी.
So Stanislavski will give you many indications. Meyerhold will give you many indications. The Natya Shastra gives you many indications. How you think on stage. माने आप अपना एक्शन तैयार करिए, आप अपना सबटेक्स्ट तैयार करिए और आप उस वक्त वहां रहिए. मतलब what is called experiencing in Stanislavski, what's called being in the moment, really listening, really seeing. And the really listening and the really seeing have wonderful little exercises again about how to really listen. माने आप मगअप करके आ गए और आप वेट करें, अच्छा मेरा क्यों आएगा तब लाइन बोलेंगे. But the question is, you have to really listen to really react. And if you don't listen, आपका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक होता है, बिकॉज आपको लग रहा है अभी तो रेस्ट का टाइम है, जब वो बोलेंगी खत्म करेंगी तो मैं बोलूंगी ना. आपको सुनना होगा. एंड सो ही हैज सम एक्सरसाइजेस अबाउट रियली हियरिंग. माने which is an exercise, it's interesting, is exactly taken from Yoga Nidra, which is that you lie in a room and you follow a sound till you can't follow it anymore. माने चिड़िया बोल रही है, आपके कमरे के बाहर बोल रही है, कुछ और हो रहा है, हॉर्न दूर है, चलते चले जाइए. These are common, actually very early exercises that you do when you come into drama school, for instance, or training or a workshop, but you do them the whole time because you train your ear. Really see का मतलब ये है, it's a small exercise which you've all done, but आपने एक चीज आंखों बंद करके देखी और फिर खोला और उसको डिस्क्राइब किया. आपने really thinking, really seeing. What else you do is really, for instance, tasting. अभी आपके मुंह में क्या स्वाद है आपको डिस्क्राइब करना है. अभी आपने क्या सूंघा आपको डिस्क्राइब करना है. You have to speak it. Why? Because when you speak it, then your senses get activated. माने that इस कमरे में कोई गंध है. कोई गंध is different from saying the गंध of धूप, अगरबत्ती, ash, धूल. It's different. And if it is different, your response will be different. And Stanislavski says it is these responses that give you the subtext. Taste, smell, seeing, hearing, and touching. If you think about it, as a thinking actor, how will you add the detail of touch? By recording that you have felt the heat, the cold, the softness. By recording. चाय का कप पकड़ा ऐसे किया तो मुझे मालूम है गर्म है, बट कितना गर्म है आपको मुझे बताना होगा. जनरलाइज्ड गर्म नहीं होना. And that's where we think that we add the detail that gives you an interest in the character. And I want to add over here something again that many of you, who, those of us who work together, I've also often said, कि मुझे बताना नहीं है कि गर्म है, मुझे बताना ये है कि कितना गर्म है. मुझे बताना नहीं है कि आपने नींबू खाया, मुझे ये बताना है कि कितना खट्टा है. That is why it's an exercise that I have done for many years with my students. They all love it. They start by loving it, then they hate it. And that is कि आपको कहें कि आप एक थाली बनाइए, एक थाली लगाइए जिसमें आपने जो जो खाना है वो आप खाइए. And you start eating and you enjoy it for the first couple of minutes and then you hate it because you can't swallow it, the taste has gone, you're more concerned about it, halak se utrega ki nahi utrega. What are you doing? You are eating and not enjoying. You're getting no taste. But Stanislavski's exercises and our own many exercises derived from there, Michael Chekhov, everybody, what is the taste?
not to show, not to say, just I said, khatta. Now, what kind of khatta? Ye imli hai ki ye nimbu hai, pata chale. It is because you have described it in your head. And then you know via control how to do it. So, just to say that Stanislavski then is creating a self of the character via yourself. तो स्क्रिप्ट में आप हैं, आपकी मेमोरी है, आपके मौसम है, आप चाय को कैसे पीते हैं वो है. Then you begin to change that to that of the character. And for that, you have to have what he calls the character's body. मेरी बॉडी तो एक साइन है, मेरी बॉडी मेरी अपनी है, मैं उसी के साथ जो जो करती हूँ. But an actor's body is not your body. The actor's body is somebody else's body. And you must train yourself as a thinking actor to let your body be somebody else's body. इसमें ईगो की भी बात आती है, इसमें डिफिकल्टी की भी बात आती है. आपने खुद देखा होगा एज एक्टर्स कि कई रोल आपसे छूटते नहीं हैं. एक रोल में ये किया, फिर दूसरे रोल में ये किया. कभी आप कहते हैं मुझसे छूटते नहीं है, कभी आप आदतन वो ही करते हैं. दोनों चीजों के बीच का रास्ता ढूंढना होगा. Because you must know that every character has a different body. And if you then think of very interesting performances, you have instances where you don't even know what the actor's body is. You only know the character's body. I'm sure you can think about that. I'm sure you have instances. And one of the great quotations of a wonderful actor called Alec Guinness is that don't be noticed on stage. अगर आप नोटिस होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? किसकी बॉडी दिखा रहे हैं? अपनी बॉडी, actor's body. If you're not noticed, you're showing the character's body. Who, for instance, when they walk down a stage, shows the actor's body primarily? कौन वो हैं जिनको actor की body भी नहीं? Actually, think about it. When a model does a catwalk, is the model showing herself or is showing the clothes? It's somewhere in between, right? If you are a superstar, you're showing yourself, not the character. And there come the other thing that is a marker for a thinking actor, not to have mannerisms. Mannerisms का मतलब एक चीज पकड़ी और लगा यही है कैरेक्टर, और उसको बार 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 करते जाए. ये सब मैनरिज्म है. इसको बिजनेस भी बोलते हैं, इसको फिलर एक्शन भी बोलते हैं. क्या है फिलर एक्शन? और कुछ करने को नहीं मिला, सिगरेट जलाइए. और कुछ करने को मिला, बाल हाथ यूं यूं करिए. क्यों? You are not able to, what Stanislavski says, deal with a pause, with a silence. कुछ नहीं करना, पर तभी भी पूरी जिंदगी आपकी सामने कैसे आएगी? आपके सब टेक्स्ट की मार्कर से आएगी. गिलास में पानी कैसे डालना है? Then he will ask the question, how do you know it's water? Supposing it was poison, would you drink it the same way? Supposing it was bitter, would you drink it the same way? So what he is doing is, आपको मैनरिज्म से हटा रहा है, आपको कंट्रोल दे रहा है, आपको सबटेक्स्ट का एडवेंचर बता रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं. बट व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दीज एक्शंस, पॉइजन तो नहीं है, कड़वा तो नहीं है, मीठा ज्यादा तो नहीं है. व्हाट इज ही एक्चुअली सेइंग? ही इज टॉकिंग ऑफ समथिंग व्हिच वी कॉल ऑन स्टेज सेंसेशन. मुझे जो महसूस होता है वो आपको भी हो एज अ स्पेक्टेटर. That's the business of the actor. That's the transmission of the actor. मुझे इतनी सफाई से बताना होगा कि exactly जो मैं फील कर रही हूं मैं ट्रांसमिट करूं, पर मेरे पास जो पहुंचता है और जिसे मैं समझती हूं as an audience might be different. But your business is to transmit what you think the character feels. And for these, again, there are many exercises.
One of the exercises that I've done for years, I used to do in the drama school, which I loved doing, which was called production process, जिसमें आप कहेंगे कि मैं एक आधे सेकंड का हैप्पी मोमेंट मैंने बनाना है. And many of you who I see, and I'm so happy to see some of the students here who've done it often with me. आपका पहला हैप्पी मोमेंट क्या आएगा? अरे मैंने वो प्राइज जीता था, अरे मेरे घर से चिट्ठी आई थी, अरे मैंने फर्स्ट आ गया क्लास में. ना ना. And one would have to ask, क्यों नाना? क्यों? Because जिंदगी में सिर्फ बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं, छोटी छोटी भी होती हैं, बहुत छोटी. So the choosing of the happy moment, which doesn't have a story, but is a moment, is the heart, very heart of modern acting and thinking acting. In other words, वो जो एक छोटा sensation of happiness. I give you an example of a little happy moment one of the students of the drama school did, was that scooter khada hai. And he was obviously playing himself as a child, and he came running and scooter ka horn pe pap kiya, bhag gaya. Happy moment. Children do that all the time. Horn pe ungli lagai, bajaya, bhag gaye. Just that much. What is that sensation? You've got a sensation of childhood. You've got a sensation of that person. You've got happiness can be half a second. कहानी कहने की जरूरत नहीं है. This is the training of a thinking actor, but the thinking actor must train herself to think. माने मैं याद कर सकूं कि मेरे हैप्पी मोमेंट आधा सेकंड के कौन से थे. कोई गिलहरी बैठ के मेरे घर के सामने कुछ चीज ढूंढ रही है, वो भी हो सकता है. कोई छोटा सा हॉर्न बजाया, वो भी हो सकता है. भागे भागे आए और एक स्टार निकल गया छतरी के नीचे, वो भी हो सकता है. But you have to depend on your own material. That is why the thinking actor, उसके हम नाम बहुत देते हैं, इमोशनल मेमोरी, ये वो. You have to be yourself in some senses. आपकी जिंदगी में क्या हुआ? अगर आप पानी में बैठे हैं और एक स्पीच बोल रहे हैं, तो वो जो पानी होगा वो आपके रीजन का होगा ना. कितनी बरसात होती है चिरापुंजी में विल बी डिफरेंट फ्रॉम कितनी बरसात होती है जयपुर में. यू वुड हैव टू फाइंड दैट, एंड दैट इज द थिंकिंग एक्टर who actually looks for the material from herself. And lastly, who helps in this process? The person sitting outside, the director often, the facilitator, your friends, who collaborate in looking closely, so that what you devise through improvisation, through play, through games, comes into your thinking, and from there it comes into your performance, and then you are just not interpreting a role. मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं अच्छा कितना लाइनों पे तो ये लिखा है. ये बहुत दफा होता है, आप लाइनें पढ़े, लाइनों का मतलब है आषाढ़ का एक दिन और इतनी वर्षा माह. आपने ये नहीं जैसे पूछा कि वो वेदर क्या था. ये मेरा धनुष है. अगर आप ये सोच के बोलें कि ये अश्वत्थामा के बहुत वुंड्स हैं, he has many injuries, उसके शरीर से पीप बहती है, the text will change. And that's why collaboration, many eyes, throwing your experience into the play, building by your own experience, less by only interpretation. और एक चीज, एक लाइन जो my personal experience as an acting teacher and as a director, जो कभी आप जब ये लाइन कहते हैं ये प्ले राइट ने लिखा है, वो किसी चीज की आड़ है कि वो आपकी थॉट है. You hiding behind somebody? Yes, you are. How do you know what the director, the playwright has said? Only by what is written. But what is written doesn't have a pause. It doesn't have a silence. और आप जब टेक्स्ट बोलते हैं या जिंदगी में बोलते हैं, भी हो जाता है, साइलेंस भी होता है, टेक्स्ट न भी बोली जाती है, चुप भी हो जाते हैं. ये तो नहीं लिखा. I give you another example. Early Greek plays,
never had any punctuation because they were carved on stone. तो अगर punctuation ना हो तो कौन देता है punctuation ऐसे text में? The actor, according to how she breathes. So meaning is connected to your breath. Meaning is connected to how you put a silence. And all that, for me, as a teacher of acting, as a director, comes out in the improvisation, not on a table. It doesn't come out by mugging the lines. It comes out by doing, finding the action. And I give you another action, another exercise. Again, those of you who I've had occasion to work with know this exercise. It's a Michael Chekhov exercise. It's a wonderful exercise. It says 20 times. 20 तवा सिगरेट जलाना और हर दफा एक के बाद एक के बाद एक के बाद आए 20 without stopping, not doing it the same. So one of the easiest, most common business is cigarette jalana. But if you have to do it 20 times and not repeat, what are you doing? 20 times different motivation without thinking of motivation. पर आप 20 दफा सिगरेट लाइट करते हैं तो 10,000 तरीके भी होंगे. और अगर 10,000 तरीके हैं तो आपको जनरलाइज्ड लाइटिंग ऑफ सिगरेट्स बाहर आ जाते हैं. सो आई वांट टू जस्ट से दैट द थिंकिंग एक्टर is an actor who does, who finds an action, who finds the silence, who finds control. All theater exercises, all across all disciplines, about control, about showing how to think, and what Stanislavski has called, and his students and Knebel, active analysis. And I want to end over here because I love this thought, but think about it. Stanislavski, via many writers, including Merlin, says, play की shape के बारे में सोचिए. उसकी anatomy क्या है? मतलब, play के muscles कहाँ हैं? उसका पेट कहाँ है? उसकी टांगे कहाँ हैं? उसकी आंखें कहाँ हैं? Play का. And if you think about it, it helps you. इस प्ले की आंखें थर्ड एक्ट में है. Is it possible? Yes, it's possible. Why is he asking you to do this? Because he wants to actively understand where and the shape of the play, because the shape of the play is made by rhythm and sound. माने राग मल्हार में उमड़ उमड़ करके जब बोलते हैं भीमसेन जोशी, तो आपको क्या दिखाई देता है? उमड़ते हुए बादल. It's because the sound is such. झन-झन करके बरखा आई, क्या दिखाई देता है? झन-झन से आपको दिखाई देता है. That's anatomy. And so he asks you to think of the play as a body. And I think a thinking actor should train herself to think कि इस play की shape है क्या. और आप अगर इसके बारे में सोचेंगे तो different bodies will come for different plays. And when different bodies come for different plays, then the meanings also change. And then, lastly, often the thinking actor will give herself the exercise of doing the scene in her own words. Why? Because you must take responsibility of what you know about the body of the play. इसके muscles क्या हैं तो मैं कैसे बोलूंगी ये scene? ठीक है? So what I'm just saying is that a person who thinks on stage uses many of her own things, her body, but not her body, the character's body. Her memory, her emotion, her ears become the character's ears, so that you can embody, अपने शरीर में किसी और को ला सके, अपनी आंखों से किसी और की दुनिया देख सके. That is the thinking actor. And it is fun to be a thinking actor. I think it's rather boring to be a non-thinking actor, because then you might as well act at home. पूरी लाइनें पढ़ ले, याद कर ले, स्टेज पे आ जाए. आप किसी और के साथ कैसे interact करते हैं will become unnecessary. And sometimes people also say, आप बता दीजिए मैडम, हम कर लेंगे. मैं क्या बताऊं, मुझे पता भी नहीं. आपको पता है, जब आप प्ले करते हैं आपको पता होना चाहिए. लीडर्स एंड
clues are with you as a thinking actor, not somebody sitting outside. And that's all that I'll close over here, and I hope we can carry on this session with thoughts and questions. Thank you very much. Thank you. I wish you could have continued more because it was too enthralling and beautiful, I must say. Thank you. I hope there are questions. I hope so. Or yes, we are open to questions now. We had requested you kindly raise your hand and we'll ask you. Yes, Hemant Bhartia wants to ask. Yes, please, Hemant. Good morning. Morning. Just wanted to, I'm from Jaipur. And I just wanted to know whether the thinking actor, as you said, usually you do not change the lines or whatever is written, the dialogues. But what I heard from you, is it that the thinking actor can change the dialogue according to situation and then carry on the acting? And number two, what is the difference between the film and the theater in thinking as an actor or character? I will take the second question second. I didn't say that you can change the line. If you're devising a play, you can change the line. And sometimes I believe, and that's my personal position, कि कभी-कभी अगर ज़बान से लाइन उतरती नहीं है तो थोड़ा आप बदल सकते हैं, but only in extreme cases. Not for comfort. I'll give you an example. Often, आप माँ बेटे का सीन कहीं लिखा हुआ हो, supposing, आधे अधूरे सोचिए. The tendency, first of all, is sometimes you go on adding the word, माँ मैंने ये किया, माँ आप क्या वहां क्यों खड़ी हैं, माँ आप इधर आइए, माँ क्यों आप ऐड कर रहे हैं? It's only comfort. आप वहां भर रहे हैं. But that is different from devising a text जो अपना text किसी devised play में डाल रहे हैं. Many of you who have done devised plays, you use your own text. This is different from using the text in a play. I did not say that you change the text in a play. I said you change the rhythm and the pace. And when the rhythm and the pace changes, the meaning changes. So think about where you want to put the pause. I started this lecture by saying a thinking actor, a thinking actor, a thinking actor, a thinking actor changed. The line is the same. So it depends on how you put the pause, the silence, the comma, the full stop. That is yours. That is not a given. क्योंकि वो पेज पे तो है ही नहीं. And film and acting, I think acting is basically the same. The medium may be different, so आपको degree का फर्क करना पड़ेगा. जैसे कि पारसी थिएटर में when you're playing for 2,000 people, your internal expression may not be that important, but your action may be. So in cinema, when you do a close-up, you have a very different. आंखें यूं जाएंगी तो 100 times magnifying हो जाएंगी. So you would have to have that control too. It depends on the medium, but the grammar is the same, I think. Yeah. Thank you. Thank you. It's Vijay Prajpat. Can you ask your question, please? Good afternoon, ma'am. Am I audible? Yes, please, you are. Ma'am, I want to ask, after reading a situation and knowing the emotion, how an actor can feel that emotion? Is there any technique to do that? I didn't get that. Say again. Emotion are you talking of? Are you talking of emotion? An actor reading a situation in a given scene and knowing the emotion of the situation, how an actor can feel or relate to that emotion. Relate or feel? I mean feel. Feel. पर इसमें आपके सवाल में ही जवाब है कि हर सिचुएशन की इमोशन फर्क है. That is why
Again, an old, tired instruction from Stanislavski. Play the situation, not the character. माने इसका simplest understanding ये है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से नहीं होता. गले में स्टेथोस्कोप डाल देंगे, डॉक्टर बन गया. और किस किस्म का डॉक्टर है तब पता चलेगा ना सिचुएशन में कैसा है. हर वीर मैकबेथ सेम, हर चीज में उसमें रौद्र और वीरता नहीं होगी. कहीं वो डरेगा भी, डरता था मारने से पहले, जाने से पहले डरता था. अगर शुड वी फेल, ही आस्क्स, अगर हम हार गए तो क्या होगा, हम पकड़े गए, हमसे न हुआ मर्डर तो क्या होगा. तो देयर इज नो इमोशन व्हिच इज फिक्स्ड. दैट इज व्हाई स्टानिस्लावस्की सेज चेंज द सीजन. अगर बदलेगा सीजन तो आपकी इमोशन भी बदलेगी और आपका टेक्स्ट भी बदलेगा. And that's how you will mine yourself to get that emotion. So there is no one scene and no one emotion. आप अपने टेक्स्ट पे लिख भी लीजिए, अगर यहाँ वो बड़े दुख में है, पर दुख की डिग्री क्या है और वो किस चीज का दुख है, तो वो आपको सिचुएशन से ही पड़ेगा. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Next is Gurleen Kaur. Yeah. Hi, ma'am. Hi. Ma'am, my question is, hello. The question is that sometimes people say that the writing is a little weak. We say that. How, as an actor, can we uplift, or how can we justify? Because I've seen a lot of times there are amateur writers, and we say, "Ki nahi, tum actor ho. Your work is to, bring that acting thing, and your work is only to do the acting. You cannot change or modify the thing." So, how do we justify with the written text over there? So there are two kinds of questions here, Gurleen. One would be that when you say the text is weak, so you could feel that it's a text which is weak because it has, it's not been worked upon long enough, etc., etc. One could be like a modern classic, Virasat, Maheshal Kunchwal. You can't say the text is weak, right? But what you can say is, I can't find a link between this and that. Then that's your business. That's an actor's business. Yes, it's an actor's business. Because it is the actor who is embodying the text. Right. तो अगर विरासत में लाइन है, मैंने ही कहा था कि आप मेरे घर ना आए. The two brothers are talking. लिखा तो वही है. बट आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सी जगह से ये डायलॉग बोल रहे हैं. You then have modified the text. And that is why every text is an interpretation, as every dialogue is an interpretation. But to change the words because you think they are not good enough, that's also possible. But it's always a discussion. Because I would also say, Gurleen, there is another tendency we have to save ourselves and say, text nahi theek. Isme hi kuch nahi hai. I think we'd have to first find out, make a dialogue first and say, क्या problem है? शब्द बड़े बड़े हैं, पहचान के शब्द नहीं है, रोज के शब्द नहीं है, classical है, right? Also, let me just add over here, बहुत दफा शेक्सपियर करने से पहले सब थर थर कांपते हैं, शेक्सपियर या कालिदास. क्या मतलब कि ये मेरे शब्द कैसे होंगे? वो आपके शब्द आपकी सिचुएशन से होंगे. And that is why one of the things that I have a long-term argument with many of my own students and many actors, हम शेक्सपियर का प्ले शेक्सपियर जैसे करना चाहते हैं. उसका क्या मतलब हुआ? हमें क्या पता? कॉस्ट्यूम पहन के तो शेक्सपियर नहीं होगा. कैसे होगा? आपकी लाइन, आपका मीनिंग, राइट? वो मेरे सामने, वो I see a knife before me will depend on the knife. And the scale, itni badi hai ki itni choti, and the dialogue would change. And I think that's where the relationship is found, not to say कि text ही खराब है. Okay, let's go to Lokesh Dhakkar. Lokesh Dhakkar, your question, please. Yes, ma'am. एक्चुअली मैम, कालिदास का जो सीन है उसमें एक्चुअली होता क्या है, कालिदास उज्जैनी जाना भी चाहता है, अध्ययन वो नहीं भी जाना चाहता है. तो एक जो डिलेमा में वो फंसा हुआ होता है. समटाइम्स कौन से सीन की बात कर रहे हो? मैम, जब वो मलिका से बात करता है, वो कहता है कि मुझे उज्जैनी जाना है, तो मलिका उसको
समझाती है, वो जाना भी चाहता है, देन वो नहीं भी जाना चाहता है। तो वो थॉट्स उसके क्या रहते हैं, हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, आई थॉट एंड आई परफॉर्म, देन आई रियलाइज इट डिडंट कम्युनिकेट। जो मेरे सबटेक्स्ट हैं वो कभी कम्युनिकेट नहीं होते हैं, मेरे एक्शंस एंड मेरी बॉडी कभी कभी एक साथ नहीं जाती है। तो वो क्या है, क्यों, वो किस तरीके से डिलेमा में फंसता है, क्या वो कहना चाहता है वहां पर? देखो, दो चीजें हैं, एक क्या वो कहना चाहता है और एक क्या क्या आप कहना चाहते हैं। वो कहना चाहता है? आपको कैसे पता? उस कैरेक्टर्स की रीडिंग, उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ के लगता है कि हाँ वो एक कहना चाहता है, उस सिचुएशन में वो एक कहना चाहता है, वो एक डिलेमा में फंसा है। कभी कभी मुझे लगता है कि उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो खुद तो नहीं उसे एक चीज समझ आता। बताओ मुझे, ये बताओ, क्योंकि आप वो टेक्स्ट जानते हो, वो डिलेमा ये है कि वो असल में महसूस कर रहा है कि वो दिखाने के लिए महसूस कर रहा है? वो रियल में महसूस कर रहा है मैम उस टेक्स्ट के हाउ साथ, डू यू नो? मुझे ऐसा लगता है। हाउ डू यू नो? उसकी इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से मैंने की, मुझे ऐसा लगता है कि वो रियल में नहीं जानना चाहता है उज्जैनी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन उसके आगे आती है कि उसे और जाने आगे की, जैसे प्ले चलता है तो क्या हुआ वहां जाके? देन वो उसे लगता था उसे नहीं आना चाहिए। क्यों लगता है उसे नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो अपना मोटिवेशन खो देता है, किस चीज का? एक लिखने का, जो उसने सारी चीजें लिखी थी। तो एक चीज बताओ कि जो टेक्स्ट में लिखा है उसको 100% जो कैरेक्टर बोलता है, आप क्यों बिलीव करते हो? यही मेरा क्वेश्चन है मैम, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना नहीं करना चाहिए? चाहिए। नहीं करना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, that हाँ as actors in a modern text, only 30% is what you say. 70% is what you hide. आप आजकल दुनिया में जब बात करते हैं, जो आपके मन में है वो उसी नहीं इंटेंसिटी से उसी तरह से बोल देते हैं कि कुछ छुपाते हैं? छुपाते हैं ना? और उसमें कोई बुरा नहीं छुपाने का, दैट्स मॉडर्न लाइफ, राइट? तो कालिदास के साथ भी वही हो रहा है। सो अगर कोई कहे छाती ठोक ठोक के किसी प्ले में मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, तो आपको बिलीव कर लेना पड़ेगा? नहीं ना, आप उसको एनालाइज करोगे। और एनालाइज कैसे करोगे? बाय लुकिंग एट द सिचुएशन। मैं किसी की बहुत ठुकाई कर रही हूं और मैं कह रही हूं मैं बहुत अच्छी हूं, तो मेरा एक्शन कहीं जा रहा है, मेरा टेक्स्ट कहीं जा रहा है। सो यू वुड हैव टू डू द एनालिसिस टू नो वो जाना चाह रहा है कि नहीं। आपका कैरेक्टर, आप जैसे वो कालिदास कर रहे हैं, शायद जानना चाह रहा है, और मैं जैसे उस कालिदास को देख रही हूँ, शायद मैं आपसे कहूँ वो नहीं जानना चाह रहा है। आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे, एक की तो मोटिवेशन नहीं होती ना। शायद क्या क्या पता वो छुटकारा पाना चाह रहा हो, वो बड़ा पोइट बनना चाह रहा हो, क्या पता वो मलिकाई से छुटकारा पाना पड़ा। ये खोल तो देने होंगे दरवाजे। देयर इज अनदर एक्सरसाइज व्हिच वी ऑफन डू, व्हिच इज अगेन अ वंडरफुल एक्सरसाइज, आई लव इट। इसके जो इस सीन में आपको वो करना है जो आप कभी ना करते, और आपको कर भी देना है, और उसको सीन को हिलाना भी नहीं। तो इस एक्सरसाइज में बहुत दफा पहले एक कोई चपत लगाता है, वो बार्ड है। अच्छा, मैं तो कभी ना मारता मैं अपनी प्रेमिका को या अपनी माँ को, तो मैं एक चपत लगा देता हूँ, आंसर मिल गया। ना ना, आपको वो नहीं करना, चपत के अलावा, मारने ठोकने के अलावा, ये सब नहीं करना। पर वो भी नहीं करना जो आपको लगता है इस सीन में नहीं होगा। आपको करना भी है और सीन भी करना है। उसमें क्या होता है, क्या होगा, क्या मिलेगा टू द थिंकिंग एक्टर? आपको मिलेगा कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी। तो इफ यू प्ले द सीन of Kalidas's long lecture as being something that he actually wants to go, but he's actually saying he doesn't want to go, बदल गया ना। और अगर मैं आपको सीन करते करते कहूं, लोकेश आप इसमें ऐसा एक्शन ढूंढिए जिससे मुझे पता चले कि वो जाना चाहता है, पर टेक्स्ट में नहीं बोलना, तो आप क्या करेंगे? ढूंढेंगे ना। और जब आप ढूंढेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। अच्छा, ये भी हो सकता है आदमी के सामने 3 चीजें भी आ सकती हैं, 4, 5, 10, 11। टेक्स्ट सीधा ही नहीं चलता, एंड की तरफ इधर उधर घूमता है, वो ढूंढना होगा। Thank you, Ajinkya. So, yes. Yes, thank you, ma'am. Ma'am, good afternoon. Ma'am, you mentioned that you can change the season of the
of the line. When you mean season, do you literally mean the season, or do you mean it in a metaphorical way that it could be totally literally? Totally literally. Got it. Okay. Totally literally. So you do a scene, and you, as I said, कड़ी धूप में, बहुत बारिश में, ठंड में, पतझड़ में, changed. Got it. Thank you, ma'am. Siddhant Bhushan, your question, please. Hello? Yes, please continue. We can hear you. Okay, ma'am. Ma'am, as a human being, what kind of traits and attitude I must have in me for being an actor? And if there is lack of something in my personality as human being, how can I improve myself to be a better human and true artist? As I'm not good with people and I always want to please everyone with some truth and lie. You want to please everybody with? Some truth and lie. कभी कभार बढ़ा चढ़ा के कुछ तारीफ कर देना जो कि मुझे नहीं लगता, तो मतलब ये कितना अफेक्ट करेगा मेरे एक्टर होने को? आपके सब टेम्परामेंट अफेक्ट तो करती है, क्योंकि आप एक्टर होने की जो चॉइसेस लेते हैं वो आपकी टेम्परामेंट से चलते हैं। और एक्टर के लिए कोई खास ही टेम्परामेंट हो ये भी नहीं है कि ये होंगे तब आप एक्टर बनेंगे। उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि आप अपने आप के लिए एक्शन नहीं करेंगे, कहानी के लिए और कैरेक्टर के लिए करेंगे। दैट इज द ओनली वन। आप अपने आप को छुपा भी सकते हैं, बट दैट देयर इज सम आइडियल एक्टर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सिद्धांत, बिकॉज मेनी एक्टर्स हैव अ पिक्यूलियर पर्सनालिटी, बट दे आर कि वो आप अगर अच्छा बोलते हैं, कोई बुरा बोलेंगे, तो हमें ये नहीं मिलने वाला कि कोई आइडियल एक्टर की पर्सनालिटी होती। जैसे कोई आइडियल एक्टर के कपड़े नहीं होते, बाल नहीं होते, हेयर स्टाइल नहीं होता, फैशन नहीं होता। आइडियल कोई चीज नहीं, बट व्हाट यू हैव टू नो इज हाउ यू रिएक्ट इन द सिचुएशन। आपकी टेम्परामेंट कैरेक्टर की टेम्परामेंट नहीं है, तो अच्छे एक्टर के लिए वो दरवाजा खोल देना अच्छा होता है। अपने आप को आप कितना बदल सकेंगे, यहाँ बदल सकेंगे कि अपने ईगो को आड़े नहीं आने। ओके मैम, एक इस चीज में मैम थोड़ा सा और एक ऐड करना चाहता हूँ क्वेश्चन में, ये कि मैं अगर रियल लाइफ में मेरा कभी कभी होता है कि जैसे किसी ग्रुप के साथ मैं रहता हूँ तो मेरा इन्वॉल्वमेंट वहां पे थोड़ा कम रहता है, क्योंकि शायद उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर लेकिन मैम जब मैं सीन करता हूँ, कभी कोई सीन कर रहा हूँ, जब मैं कोई सीन कर रहा होता हूँ, तो वो इम्पैक्ट वहां पे भी पड़ता है उस चीज का, कि वहां पे भी इन्वॉल्वमेंट मेरी थोड़ी सी छूट जाती है और ये मुझे पता चल रहा होता है। This is something you'd have to build, Siddhant. This is something that all, from acting exercises, that your concentration has to be huge. And that is why there are many exercises, including many forms like Kudyatam, which is only about good concentration. Right? बस deep की तरफ देख के वही करना है, बस. That concentration has to be built. That's why मन में जब आप कभी-कभी a real inner speech के बारे में करते हैं Stanislavski का, या a real inner speech of, let us say, Kudyatam, उस इनर स्पीच में अगर आप देखें, हम बात तो हम अभी इस सेशन में है, हमारा दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाऊं, वो बोल देना होगा। और जब वो बोलेंगे तो आपको पता चलेगा आपका माइंड वॉन्डर करता है, और माइंड वॉन्डर के लिए फोकस कैसे लाना है, दैट इज समथिंग दैट इज बिल्ट एंड दैट्स व्हाट्स कॉल्ड कंट्रोल। Thank you. Vijay Prajapat, yes please, your question. Yes ma'am. Yeah, Vijay, if you could just on your camera please, that will be nice. We'll like to see you also. Thank you so much. Thank you. One incident, a workshop by late Mahendra Mewati ji, and he told to all actors, it is very essential and first thing to know who are you, and we answered we are human, we are actor, we told our names and all other things, but he didn't accept all those things. So we got
confused, and that workshop got cancelled because of some reason. But still, that question haunts me especially. What is the meaning of that question for actor? Who are you, and how it helps as an actor to develop a character or something? See, I can't actually say what Mahendra would have meant by who are you, but I can imagine that this actually means कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप क्या करने आए हैं. एंड अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो बहुत दफा जवाब भी मिल जाते हैं. मैं यहाँ मेन रोल करने आया हूँ, मैं यहाँ सुनने आया हूँ, मैं यहाँ टाइम पास करने आया हूँ. ऑल डिफरेंट. So when sometimes that question is asked, who are you? You will have to ask, what are you doing there? आप वहां क्या कर रहे हो? क्योंकि ये एक्चुअली बड़ा भारी क्वेश्चन है. Who are you would mean अध्यात्म के बारे में भी तो हो सकता है, पर वो तो नहीं ही होगा ना थिएटर वर्कशॉप में. तो आपको सवाल ये पूछना होगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? It's why are you here? What are you doing here? Who are you in that sense? आपने कौन सा मुखौटा पहना है would be the question. Thank you, ma'am. Yes, Aman Tiwari, please. Your question, Aman Tiwari. Yeah, ma'am. Ma'am, often we are told that an actor's job is to get into the character, and we often read in articles and interviews that an actor's job is to get into the skin of the character and everything. And even after the right process, even after all the things that you have told in this session, like finding the right motivation, making a background story, and everything that we have learned in the books and in the sessions so far, we still miss that thing that that every director wants. Like whenever we are preparing for a character, like if I'm talking about me personally, I do all the right process, but still my character feels vacant. It feels like as if I have not reached that potential yet of that character, as if I'm not feeling it completely. So I still quite didn't understand that what is the problem here. Aman, it would be very hard to do this on Zoom, because if there is a theater workshop or something that a more pointed answer can be found. But there is a little thought here. You feel empty or your character feels empty? My character feels empty. I'm feeling all the emotions. I'm putting all the efforts. So the problem is of transmission. The problem is of transmission. Yes, it might be, ma'am. Ma'am, because in all the sessions and even in the drama school, my persistent thought of asking this question it comes from my practical practice. Like of all the characters I've approached, there's this basic persistent problem that have, kind of, it's a very, I don't know how to explain right now, but it sometimes make your character so vacant, as if you have not practiced at all. तो वेकेंट वाली जो बात है उसमें अमन इज वेरी मच टू डू आई थिंक विद कंसंट्रेशन. इफ यू आर फुल्ली फोकस्ड इट्स नॉट वेकेंट. आप जब फुल्ली फोकस करके एक स्टोव को सफाई कर रहे हैं और उसको आपने उसमें यू हैव टू लाइट अ स्टोव, बट उसके जो स्टोव के जो वो है उसमें कार्बन है, तो आप जब उसको सफाई करते हैं तो आप किस लिए कर रहे हैं? कार्बन हटाने के लिए, है ना? तो स्टेज पे भी जो आप एक्शन कर रहे हैं वो उसको करने के लिए कर रहे हैं, किसी और चीज को करने के लिए नहीं कर रहे हैं. अगर वेकेंट तब होता है जब मुझे मोटिवेशन की डायरेक्शन नहीं समझ आती. आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके डायरेक्टर ने आपको बताया था, पर आपका जॉब है कि आप वो क्यों कर रहे हैं मुझे पता चले आपके कैरेक्टर के कारण, इसलिए नहीं क्योंकि आपको कहा गया है. So whenever you do an action in real life, you do it because you want to achieve something. आपने बनियान पहननी है तो आप ऐसे तो नहीं पहनेंगे कि अच्छा ना भी पहने, पहननी है तो पहननी है. So that's the same in acting. If you have to do something, you have to do it, and you have to do it because it has to be done.
नॉट बिकॉज अरे ये तो एक्टिंग है, ऊपर ऊपर तरीके से कर लें. दैट इज वाई फॉर इंस्टेंस आपको इतनी ट्रेनिंग देते हैं, उसमें चाय पीते हैं तो कप में चाय होनी चाहिए, नहीं तो ये हलक से नहीं दिखता. तो अगर हलक ना दिखे तो मुझे पता भी नहीं कि पी के नहीं पी, ऐसे ही as they say in Punjabi, kanni kaati. I mean, that's not the point, you know. So you would have to say what you do, you have to do precisely. उसमें वेकेंसी नहीं होनी चाहिए, और अगर वेकेंसी है then we have to find the way कि क्यों वेकेंसी. Because when you do a work in real life, it's not vacant. चप्पल से कीचड़ निकालना है तो निकालना है, ऐसा तो नहीं कि ऐसा निकालिए कि नहीं निकले, बस पानी में यूं कर दिया. पानी में यूं किया तो वो रीजन होगा कि आपने पानी में जल्दी क्यों किया. हैव टू फाइंड इट आउट. Okay. Thank you. Yeah, Anuradha ma'am, can we take more questions? Because That's up to you. okay. You know, we can have 5 minutes more. Okay, fine. Thank you so much. Yes, Naveen Kumar, your question, please. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर मतलब मेरी लैंग्वेज अलग है, हिंदी से अलग है मेरी लैंग्वेज, और मेरे मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस है जो मतलब मेरी खुद की लैंग्वेज में है, तो वो सब एक्सपीरियंस उसी में है. तो अगर मैं हिंदी थिएटर कर रहा हूँ तो मैं उन एक्सपीरियंस को याद करूंगा. तो जब मैं मतलब टेक्स्ट लेता हूँ या मतलब कुछ सोचता हूँ मतलब कैरेक्टर के बारे में या कुछ करता हूँ, तो मतलब ऑकवर्ड लगता है कि अरे यार ये तो उससे डिफरेंट है, ये तो अलग है, मतलब उससे मतलब डील कैसे करना है. एक्सपीरियंस और स्पीच थोड़ी फर्क है चीजें. तो अगर भाषा अलग है तो that one can train oneself in a भाषा. But जिस किस्म से एक्सपीरियंस को आप स्टेज पे लाते हैं, that is not dependent on भाषा. Experience can be shown on stage without language. There are many exercises that there's a whole scene full of words. But I may ask the actors to do it without words. Why? Because I want the emotional graph. That doesn't need words. But the words are necessary if the text requires you to have words, then you must practice with that bhasha. तो दो चीजें हैं. Diction, speech is different from subtext and experience. Experience तो आ ही सकता है, फिर भाषा को आप वर्क कर सकते हैं. एक रिलेशनशिप भी होता है अदर ह्यूमन बीइंग के साथ, तो खुद की लैंग्वेज में थोड़ा वो मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग रिलेशनशिप है, और जो हिंदी में बोलते हैं उनके साथ थोड़ा अलग है. और रिलेशनशिप शब्द पे डिपेंड नहीं करता. रिलेशनशिप तो इनर लाइफ पे डिपेंड करता है. तब अगर ये रिलेशनशिप अगर शब्दों पे डिपेंड करे तो आप अपनी भाषा के अलावा किसी और नाटक को ना कर पाए. वो तो आप कर पाते हैं ना, किसी और कल्चर का नाटक भी ना कर पाए. तो रिलेशनशिप को ढूंढना होगा और फिर उसका जो इजहार करना है, जो भाषा है, उसको उसके ऊपर काम करना होगा. Yes. Right, I think we can take 2 more questions. Kamal Madi, your question, please. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी जैसे अपने स्पीच में 5 सेंसेस की बात की थी, तो हाउ टू फाइंड आउट 5 सेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर, कि उसका टच क्या है कैरेक्टर का, कैरेक्टर की स्मेल क्या है कैरेक्टर का, और बाकी चीजें क्या है, तो ये मेरे को जानना है. Wire yourself. पहले अपने बारे में ऐसा सोचना होगा. जो मैंने आपसे कहा कि अभी इस कमरे में क्या महक है, अभी मेरे माउथ में क्या टेस्ट है, उससे आप अलर्ट होते हैं कि आपके 5 सेंसेस हमेशा चलते हैं. तो व्हेन यू गो ऑन स्टेज आपको ये दिखाना है कि उस कैरेक्टर के भी 5 सेंसेस चलते हैं बाय प्लेइंग द एक्चुअल. वो बार बार वही वापस आती बात, प्लेइंग द सिचुएशन. इस घर में अभी किसी की मृत्यु हुई है तो घर की गंध कोई और होगी शायद.
कि तो अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो हमें मिलेगा नहीं. पर पहले सोचना बड़ा जरूरी है कि स्टेज पे 5 सेंसेस, टच भी, महक भी, हो या ना हो, जैसे आपकी चलती है वैसे ही उसका चलता होगा. पर जो जर्नी है वो आपके अलर्टनेस पर डिपेंड है कि आप अगर ये सोचें कि हाँ ये जरूरी है. बहुत दफा हम ये समझते हैं शायद जरूरी ना हो, बट हर सिचुएशन में योर सेंसेस आर अलाइव एंड दैट इज द सिचुएशन इटसेल्फ. दैट्स व्हाई मैं बार बार आज उस पे जा रही हूँ, मौसम. Right, thank you. And Deepika, we can take your question. I think the last question, Deepika. Yeah, hi ma'am. Hi. So my question is regarding the third point when we talk about control of the action. So after a point when you have performed the piece, the play 3, 4, 5 or however many times, there comes a point when things become mechanical. So my question is regarding how to tackle that mechanical aspect of performance when it gets mechanical. The action, do we rework on the subtext, or basically how do we approach the escape or the, how do we work It's that? an age-old problem, Deepika, and it's a problem that afflicts especially that kind of show that may have 500-year runs or 30 years like Mousetrap. So it's an age-old problem. What it is that one has to, at some point when one realizes कि बहुत ही mechanical हो गया और लोगों को भी लगने लगा mechanical, you'd have to be honest with yourself. Then there are exercises, there may be slight changes that you do in discussion. You start again. You take the fact that if I've done this show 550 times, तो पहले वाले show में आपने क्या-क्या add किया था. You revive. And some changes can happen also, but the changes must happen in collaboration with your other actors. तो आज मैं बोर हो गई, मैंने कुछ ही और कर दिया stage पे. That's not possible. So one would have to be very alert कि कहाँ जो है. Because if you think about it, mechanical acting 1 second में भी दिखती. बहुत सही है, टाइमिंग भी बिल्कुल सही है, सीन चलता है 6 मिनट 2 सेकंड, उसी थिंग चलता है, yet it's vacant. It's vacant because the relationships have not been made. तो उसको रीमेक करना है, and of course, as is the case, there are many thoughts and exercises that one can do, but it's often a collaboratory thing. एक से एक, जैसे बीमारी फैलती है ना, तो एक वेकेंट हुआ तो दूसरा भी वेकेंट होता है. You know? Yeah. Thank you, ma'am. Thank you everyone. It was a wonderful session, and I'm sorry we are not able to take all the questions. Anuradha, if you can just answer this, please suggest some reads on realism apart from Chekhov, Mohan Rakesh or Vijay Tendulkar. This is a question, and I think that can be the last question. Mahesh Alkunchwar, Ibsen. I mean, one of my great favorites is Mahesh Alkunchwar. Yeah. Vijay Tendulkar, of course, is already mentioned. Mohan Rakesh mentioned. Yes. There are early plays of Girish Karnad. They have a certain kind of realism, and there are lots of new young writers who are working on very interesting texts. Who are producing texts. But in the classic canon, these are there. Or, for instance, there's a whole bunch of new translation of Ibsen, which has just come out directly from Norwegian to Hindi. वो भी देख लीजिए, पूरे सारे के सारे. So the great European realists are there, of course, in translation, and of course the great Indian writers are there. But I would say one of my first readings in this would be to look at all of Mahesh's work. Okay. Thank you so much. I think we had a beautiful and wonderful audience, overwhelming response. We'll try and request Anuradha ma'am if we can have another webinar with her. My pleasure. Thank you. And thank you so many of you who I know, who I've seen after many, many years, students and
the people who we've had the, I've had the occasion of working. Thank you very much. And thank you, Anuradha and Riyadh. Thank you, Anuradha Kapur. Thank you, audience. Thank you very much. All the best. Good luck.